Rehan. So today we'll study force and pressure. Okay. So today we'll study force and pressure. Physics, eh? Let us start. First, before going to force, first let us know what is rest and what is motion. What is rest and what is motion? A body is said to be rest if it does not change its position with respect to surrounding. गोटे बॉडी को आम रेस्ट केतले कहवा जदि से बॉडीटा ता पोजिशन को चेंज करिवो नाही विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग ताले ताकू रेस्ट कंडीशन बॉडी अछि बोली कहबा. फॉर एग्जांपल सपोज यू आर इन ए फील्ड. ओके, फील्ड रो छु इन ए फुटबॉल ग्राउंड. इफ ए बॉल इज प्लेस्ड देयर जो ग्राउंड रे बॉल टेप दी थुआइज but nobody touch the ball or nobody foul it. Okay, means the ball is in stationary position, means it is not changing its position with respect to surrounding. Then that condition of the ball is called rest. Okay, then what is motion? Just opposite. When the body changes its position with respect to surrounding, then it is called in motion. Okay, suppose you just foul the ball, means you are applying the force externally, that's why it moves. ये बॉल टाका मूव कला with respect to surrounding, that is called motion. Understood? So long story short, what is rest? If a body does not change its position with respect to surrounding, then the body is said to be rest. If the body changes its position with respect to surrounding, it is called motion. Clear? Okay. Then what is force? What is force? Force is nothing. Force is the cause, or force is means the pulling or pushing effect of a body. Okay, force is the pulling or pushing effect of a body, so that it tends to move or it changes its size or shape. Okay, that is the force. What is force? Force is the pushing or pulling effect of a body, so that it tends to changes its position or tends to change its shape or size of the body. Okay, just here is an example. When a force is applied, okay, when force is applied as push or pull on a stationary body which is free to move. If a body is in stationary, is in rest condition, if you push the body or if you pull the body, then it will move. Means the body is in rest, the body rest thila, you produces its motion. तो तमें ये कौन करला ता motion को produce कला. How? By push it, by pull it. Under the pushing or under the pulling effect, it started to move. That is the force. Okay, that is the force. Okay, then okay, force can change the speed of the body.
force can change the speed of the body. Just like if body is at rest, you just applied the force, it started to move. Or whenever a ball is moving towards you, যদি ଗୋଟେ বলটা ତମ ପାଖକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି, if you stop it, then its speed will be changed. Okay, so by applying the force we can changing the speed को हमें चेंज करी पारिबा, means we can increasing the speed, we can decreasing the speed. Okay, we can convert a rest body into motion, or we can convert a motion body into a rest. Similarly, force can change the shape and size of a rigid and non-rigid body. Non-rigid body. Non-rigid body is a non-rigid body. Okay, by applying the force, we can change the shape. We can change the shape and size. How? Do you observe the mechanics are applying forces, are hammering on aluminium, on steel, or on metal sheets, so that it deforms, it changes its shape. In simple way, जदि फॉर एग्जांपल आम घर मानकरे जो आम जो अटा जो चकुड़ती, तो आम ताकू फोर्स अप्लाई कर से अटा जो चक्की को बात से तार जो कौन तार जो गोल करा जाए ना, ताकू आम कौन करता ताकू आम फोर्स अप्लाई करी डिफरेंट सेप कर पूरी साइज कर रुटी साइज तो कर पराठा साइज कर किसी कर तो केमी करूँ ना फोर्स अप्लाई करी तार सेप को चेंज कर. So force can also changes the shape of the rigid body. Okay, of a non-rigid body. Clear? Okay, then some examples is given here. Just look here. 3-4 examples are there. First one is a grass ruler initially at rest, when pulled begins to move. देखिए कि ग्रास रूलर एथरे कौन जब फील्ड रे थिबो पड़िया थिबो तो से रेस्ट कंडीशन न थाए. ओके, तो आम एथले कौन करछु ताको एथले पुल टाणुछु तो से कौन होची से मूव करे आरंभ करछु, तो से रेस्ट कंडीशन नथिला तो आम ताको पुल कलु, तापर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कलु सो दैट इट स्टार्टेड टू मूव. ओके, से बढिया. सेकंड, ए फील्डर व्हेन कैचेस ए बॉल स्टॉप्स द मूविंग बॉल. मतलब फील्डर एतले फील्डिंग करूची कैच धरची से बॉल को दौड़ी दौड़ी जाकि बॉल को कैच करूची, मीन्स बॉल कोन बॉल होची मोशन कर आसी ताको से स्टॉप कर दोची अटकी दोची. इट्स आल्सो एन एग्जांपल, मीन्स गोटे मूविंग बॉडी को कौन करछ ना रेस्ट कर दोची बाय अप्लाइंग द फोर्स. थर्ड, ए मूविंग कार स्लोज डाउन ऑन अप्लाइंग द ब्रेक. मतलब कार मूव करछ रास्ता रे एतले तमे व्हेन यू स्टार्टेड टू अप्लाई द ब्रेक, तो ब्रेक अप्लाई कोन हो ना गोटे तापर फोर्स पड़छि कोन दैट इज कॉल्ड ब्रेक अप्लाई, मीन्स यू आर अप्लाइंग एन रिटार्डेशन, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑन इट सो दैट इट स्टॉप्स. या कोन तुमरो यूज से मोशन जाउछि कारटा बट तुम गोटे रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करछो तमरो स्टॉप हो यूज. तमर ये गोटे मूविंग बॉडी रो तार स्पीड को कम कर दोछि और तो रेस्ट बंद कर दोछि. केमिति ए पुश ऑन ए स्विंगिंग गर्ल स्पीड्स अप हर स्विंग. सिंपल गोटे झीलटे दोड़ी झुलुची तो जीव जोर झुले देव फोर्स अप्लाई कर तो कौन हम अल्टीमेट तार स्पीडटा कौन हो बढ़ी देखी तो फोर्स ये जिन कर. ए प्लेयर व्हेन अप्लाइज फोर्सेस बाय हॉकी स्टिक्स ऑन द बॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल चेंजेस. ओके, मैं बॉल गड़गड़ी आस हॉकी खेलुच बॉल तुमको मैंने कर गड़गड़ी आस तुम कौन तुम से हॉकी स्टिक रे
से बॉल तार डायरेक्शन चेंज कर पारछ जको दिगु तार मतलब चेंज कर पारछ ओके यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द हॉकी बॉल बाय यूज ऑफ योर हॉकी स्टिक सो कौन है ना फोर्स कौन कर पारछ ना सिंपल जिनस फोर्स इज ए कॉज और इज द पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी इट कैन चेंज द what motion of a rest body or it can stop a body or it can make rest a moving body or it can change its shape size it can changes the direction of the body okay तो फोर्सफुली कहवा इस तरह एग्जांपल थिला ओके अच्छा कौन देखो देख लगा when force is applied as a stretch or squeeze on a body which is not free to move it changes its size or shape of a body और stretching a rubber string its length increases तो देखी थियो rubber string रो ता कोन थे ना rubber string रे तार elastic nature था means if you apply the force तो जे टाणी बुसे कोन हो it deform हो means तार length बढ़िबो एतो छाड़ देबो तो कोन हो it will come back to its original position or it will regain its original position or stretching the rubber string its length increases or squeezing a tube gum the shape also changes okay so in this way we can define the force बुझा पड़ला so जब देखिवा force को ना simply force F is equal to m into a force is equal to mass of a body into acceleration produced on it F is equal to m into a F vector is equal to m into a vector force is a vector quantity okay force is a vector quantity because here acceleration is there na acceleration is a vector quantity that's why force is a vector quantity when you will study 9th class the 9th or 10th class then you will thoroughly study about it its derivation how F equal to m into x m into a F equal to m into a okay everything in details we will study in higher classes okay okay here some notes are there a force does not change the mass of a body on which it is applied yes जदि गोटे बॉडी ऊपर तुम फोर्स अप्लाई करछ ता मास को तुम चेंज कर पारे मास नेवर बी चेंज व्हाट इज मास it is the amount of substance contained within a body is called mass okay तो गोटे बॉडी भितर जेतिकी तार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थिबो ना तो तार मास बोली कहबा तो आमे फोर्स अप्लाई करिकी कोन रेस्ट बॉडी को मोशन करि परिबु मोशन बॉडी को रेस्ट करि परिबु तार डायरेक्शन को चेंज करि परिबु शेप को चेंज करि परिबु बट वी नेवर चेंज इट्स मास एने समझ जो ता मास को चेंज करि परिबु नाइ ओके वी कैन नॉट सी ए फोर्स हाउ यू कैन फील यस आमे फोर्स को देखि परिबु कि मन कर तुम तुम छिड़ा तुमके ठेल देला तो ठेल देला तुम तो इफेक्ट फील कल कि तुम आगू झुकी पड़ल कि पड़ी गल बट कैन यू नोटिस तुम देखी पार कि से फोर्स जो अप्लाई कला केमी फोर्स अप्लाई कला देखी पार कौ भाया फोर्स अप्लाई कला नो यू कैनट वाच इट यू कैन सी यू कैनट सी अ फोर्स बट यू कैन फील इट यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स टू द एग्जाम्पल कहली ओके अच्छा तर मैं कहली फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी ना एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो फिजिकल क्वांटिटी रो बोथ मैग्नीट्यूड थिबो उतर डायरेक्शन थिबो देखो कहबा ना वेक्टर क्वांटिटी कहया फोर्स रो बोथ मैग्नीट्यूड अछि एंड डायरेक्शन अछि ओके आमे गोटे बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई कले बल अप्लाई कले तो से गोटे निर्दिष्ट दिगरे से मूव करे एवं तार मैग्नीट्यूड मध्ये अछि that's why it is called a vector quantity it is okay both possess what magnitude and direction clear oh
देन नेक्स्ट शिक्षा कौन अच्छी यस ओके फोर्स को लिखा है देखो फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो हेड ओके तो एफ फोर्स एफ वेक्टर ये जो एफ हूँ फोर्स तापर मोर जो देछि एटा कौन एटा हूँ एरो हेड देछि ये एरो हेडटा शो कर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी ये जो एरो हेड रो ये जो स्ट्रेट लाइनटा अच्छे ना तो स्ट्रेट लाइन शोज द मैग्नीट्यूड मीन्स आर भैल्यू केते मैग्नीट्यूड आउ तार जो एरो हेडटा रहा एरो हेड शोज इट्स डायरेक्शन से एरो हेडटा कौन शो कर तार डायरेक्शन को शो कर ओके तो लिखाई द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड द लेंथ ऑफ द एरो मेजर द मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड शोज इट्स डायरेक्शन ओके बुझा पड़ला नेक्स्ट यूनिट ऑफ फोर्स इस जेहेतु गोटे फिजिकल क्वांटिटी आर गोटे कौन यूनिट व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स ना फोर्स रो एसआई यूनिट एसआई कौन इंटरनेशनल सिस्टम और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल तार एसआई यूनिट हूँ कौन न्यूटन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन NEWT and but it is symbolically written as capital N. It is symbolically written as a capital N. तो ये जो न्यूटन है ये कहाँ है ना सार आइजैक न्यूटन को नाम है बट सार आइजैक न्यूटन ना तक तीनटा लॉ अच्छी ओके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो एक्सेप्ट न्यूटन को सेकेंड लॉ रहा एफ इक्वल टू एम ए मुझे कही तो 9th क्लास में पढ़ो तो जेहेतु न्यूटन ही आपको डिस्कवर करते आर कौन अच्छी तार एसआई हूँ न्यूटन दैट इज कैपिटल एन ओके अच्छा तो एबे आम जाना से जो न्यूटनटा कौन व्हाट इज वन न्यूटन ये जानलु कि फोर्स रो एसआई यूनिट हूँ न्यूटन से जो न्यूटन वन न्यूटन वैल्यू केते व्हाट इज वन न्यूटन अच्छा वन न्यूटन को केबे डिफाइन करबा इट इज द फोर्स इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी मतलब वन न्यूटन फोर्स गोटे बॉडी ऊपर अप्लाई हम ऑफ मास 1 kg कहाँ पर ना गोटे 1 kg मास ऑफ बॉडी ऊपर ओके इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन से जो दिगरे मूव करतो सही दिगरे ताले कौन हम ना इंक्रीजेस इन स्पीड बाय 1 मीटर इन 1 सेकेंड एंड तार से बॉडी रो स्पीड को से कौन करिवो इंक्रीज करिवो बढ़ेइवो ओके केमती ना 1 मीटर इन 1 सेकेंड गोटे सेकेंड रे गोटे मीटर से बढ़ी पाता स्पीड को बढ़े पारे तो सही जो अमाउंट को कौन कहबा ना फोर्स कहबा ओके तो फोर्स हूँ कौन लिखली एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन केमी करवा ना 1 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स when applied to a moving body गोटे मूविंग बॉडी पे अप्लाई होची जो मूविंग बॉडी मास केते अछि ना 1 kg एंड इट इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन एवं गोटे बॉडीटा जो डायरेक्शन में मूव कर सही डायरेक्शन अप्लाई होची ताले कोन हम ना तार स्पीड को से कोन करबो ना तो बढ़ाइबो 1 मीटर इन 1 सेकेंड दैट इज द कोन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ओके देखो it called लिखला now we have read that our earth attracts each body towards it the force of attraction exerted on body by earth is called the weight of the body or the force of gravity that acts on the body अब जानते कि अर्थ कौन करे ना अर्थ कौन करे इट अट्रैक्ट ईच बॉडी टुवर्ड्स इट प्रत्येक बॉडी को अर्थ निज आड़ को टाणी आने ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा
क्या भितर ना एक्सर्टेड बाय ऑन एक्सर्टेड ऑन बॉडी बाय अर्थ गोटे बॉडी ऊपर क्या द्वारा अर्थ द्वारा दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी तार वेट ऑफ द बॉडी बोली कहवा और दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट अर्थ ऑफ द बॉडी गोटे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ गोटे ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छी जोटा से बॉडी ऊपर एक्ट कर से फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन करे ना सब से बॉडी को अर्थ आड़ को अट्राक्ट कर ओके तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन गला तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी द वेट ऑफ द बॉडी ओके वेट ऑफ द बॉडी डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस वेटटा कौन होता ना ये डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेसेस रे आमर होची डिफर करे गोटे कन्फ्यूज था वेट एंड मास गोटे था वेट एंड मास वेट और मास वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर बोथ आर डिफरेंट वेट होची अलग मास होची अलग मास मु कहि गली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट विद इन योर बॉडी इज कॉल्ड मास मास को आम चेंज कर नहीं बट मास इज ऑलवेज कन्स्टांट सब सबुआड़े कन्स्टांट बट वेट डिफर वेट हूँ कौन कहना डिफर करे कहीं वेट हूँ कौन वेट हूँ और ग्राविटी डब्ल्यू वेट डब्ल्यू इक्वल टू सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी वेट इज ऑल्सो इक्वल टू द फोर्स वेट इज ऑल्सो इक्वल टू द फोर्स सो तो प्रत्येक बॉडी जेहेतु प्रत्येक बॉडी अर्थ ऊपर अच्छी तो अर्थ कौन हो गोटे ग्राविटेशनल फोर्स हो प्रत्येक बॉडी ऊपर तार ग्राविटी पड़ुची तो से ग्राविटी जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ से ग्राविटी तो कौन होता है ना तार वेट भेरी करे कहीं अर्थ ग्राविटी सब सामान नुहे अर्थ ग्राविटी भेरी करे प्लेस टू प्लेस और भेरी करे ओके अर्थ ग्राविटी प्लेस टू प्लेस और भेरी करे जब देखा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ सेंटर रे तो ग्राविटी हूँ जीरो अर्थ तार जो इक्वेटर रे ओके इक्वेटर रे तार ग्राविटी हूँ मैक्सिमम आम जो इक्वेटर पुल को आसवा तो तार ग्राविटी कौन हम कमी को आस सॉरी इक्वेटर हूँ कौन तो मिनिमम इक्वेटर आम कौन आस मिनिमम समझ इक्वेटर पुल को जा तार कौन हम तार हूँ वेटा बढ़ी बढ़ी जेहेतु वेटा फिक्स नुहे वेटा हूँ भेरी कहीं डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी एम तो फिक्स बट जो जी रहा ग्राविटी और वेट इट इज वेरी ओके तेणु ये डिफरेंट प्लेस डिफरेंट होते द फोर्स ऑफ ग्राविटी और वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ एट अ प्लेस द फोर्स ऑफ ग्राविटी और बॉडी ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 kg और 1 न्यूटन ये जो जीरो वैल्यू जान जीरो वैल्यू हूँ जी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होची एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.81 और 9.8 अप्रोक्सीमेटली आपको केते 10 मीटर पर सेकेंड देउछि तापर जदि गोटे बॉडी रो मास होची 1 kg ताहले तार होची ये केते आसीबो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट केते आसीबो ना 1 kg पर 10 न्यूटन कहीं ना वेट इक्वल टू एम इंटू जी ना तो एम हूँ 1 kg आउ जी के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आइला कौन 1 10 तो 10 न्यूटन ओके 10 न्यूटन इन अदर वर्ड्स 1 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट अ प्लेस ऑफ 0.1 kg और 100 ग्राम से भाया जदि गोटे बॉडीर मास थी के 0.1 kg 0.1 kg के 100 ग्राम तार वेट के हम ना 0.1 इंटू 10 के आसो 0.1 इंटू 10 आसो 1 आसो 1 न्यूटन आसो तो 1 न्यूटन कहीपर 1 kgf कहीपर kgf फिल्म नुह kgf मीन्स 1 न्यूटन माने 1 kg इंटू एफ कहते वेफ हूँ 9.8 और 10 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके तो न्यूटन कहीपर मतलब बोध kgf कहीपर देखा 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन नियरली In other words, 1 Newton is the force
that we have exert to hold a mass of 100 gram in our palm. ओके तामरे कोई बेरा जदि आम 100 ग्राम बा 0.1 केजी रा गोटे बॉडी मास को आम हाथ में धरुंच ताहले सी आम पाम बा हाथ उपरे केते ना 1 न्यूटन से बल प्रयोग कर 1 न्यूटन से फोर्स अप्लाई कर ओके सिंपल जिनस तो आज ये आज आज क्लास में ये बुझाऊँ नेक्स्ट क्लास रे मु आउ जो रहा से पार्ट हम बुझे यदि किसी डाउट था मत फोन कर पचारू मुझे डाउट क्यों करी ओके आउटे पढ़ी था बट देहटा भल ना सो एति मज क्लास कर नेक्स्ट मु काली आउ सब स्टार्ट करी ओके आ तो केमिस्ट्री मत किसी क्वेश्चन छाड़ी बट ठीक अच्छे बतेबी सब आंसर कहि फिजिक्स दुईटा खंड क्लास जाऊ तापर केमिस्ट्री सब आंसर तक बतेबी ओके डोंट वरी तो सो आज जो क्लास है भल भाव में देखू आ जो डाउट था डेफिनेटली अच्छा ओके थैंक यू।